Welcome students. In today's class we will solve some problems which are related to the differentiation, which is also known as derivative. So in case of differentiation, to find the derivative of given function, first we have to understand some basic formulas. So the first formula is, so the d by dx x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. Next one is d by dx log x is equal to 1 by x. So derivative of log x is 1 by x. Next, derivative of sin x, that is cos x, next for cos x we have minus sin x, for tan x derivative of tan x, that is sec square x, derivative of cot x d by dx cot x is equal to minus cosec square x. Okay, so here you can see that first formula is d by dx x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. Next, d by dx log x is equal to 1 by x. Then d by dx sin x is equal to cos x. D by dx cos x is equal to minus sin x. D by dx tan x is equal to sec square x. Then cot x is equal to minus cosec square x. Okay, so let's see another some formulas. So next is d by dx sec x is equal to tan x into sec x. Next, d by dx cosec x is equal to minus cosec x into cot x. Okay, and another one formula is d by dx e raised to x is equal to e raised to x. And remember one thing, derivative of constant. Okay, derivative of constant is 0. So all these formulas which you have to remember. तो ये सब फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं. अभी इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम आज कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे. So see here. Now we will start with some examples. So our first example is, if they have given us that x raised to 8. So we have to find the derivative of x raised to 8. So how you can find the derivative of x raised to 8? See here, basically this is related to the our first formula, and our first formula was derivative of x raised to n. So what is the formula? That is nx raised to n minus 1. So in this case you can write here d by dx x raised to n. Okay, here instead of n there is a 8. So you can write 8x 8 minus 1. So this will be 8x 7. Okay, so this is our answer. X to the power 8 is equal to 8x 8 minus 1, that is 7. So similar problem we will take related to this. So our second problem is,
See here, if the next problem is x to the power 5, then the formula which we are using here, that is d by dx, x raised to n is equal to nx raised to n minus 1. So this will be d by dx, x to the power 5, and it will be 5x, 5 minus 1. So this will be 5x to the power, okay, 5x to the power 4. So this will be our answer. And similarly, you can find for x to the power 2. So this will be, directly I will write here answer 2x to the power 1. So in this way you can find the answer of such a derivative. So here for x to the power 3, our answer will be 3x square. So the formula which we are using here, that is d by dx, x to the power n is equal to nx to the power n minus 1. Okay, so let's see few another examples. See here, now in case of addition, so we have to understand one thing is there. So if there is a u plus v फंक्शन, यहाँ पे जब u है और v है, मीन्स हमारे पास दो फंक्शन है, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव निकालेंगे u का और हम प्लस लिख के डेरिवेटिव निकालेंगे v का. ओके, सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले निकालना है डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का. यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है u और सेकंड फंक्शन है v. सो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u एंड देन वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ v. तो इससे रिलेटेड एक हम प्रॉब्लम अभी देखेंगे. लेट्स कंसिडर here number 1 in case of u plus v rule. So the problem is x to the power 3 plus sin x, x to the power 3 plus sin x. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे d by dx, x to the power 3 plus sin x. ओके, तो यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है पहले x टू द पावर 3 का, प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव सेकंड में निकालना है हमें sin x का. तो x टू द पावर 3 के लिए डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर और sin x का हो जाएगा cos x. सो दिस विल बी आवर आंसर, 3x स्क्वायर प्लस cos x. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. Okay, see here, second example. So if I have given you x to the power 4 plus cos x, then how you will find it? So first you have to write d by dx, x to the power 4 plus cos x. जो मैंने फॉर्मूला भी मेंशन किया था वहाँ पे था, पहले हमें निकालना है फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x टू द पावर 4 का, और सेकंड हमें निकालना है cos x का. तो ये हो जाएगा 4x टू द पावर 3. यहाँ पे हमने d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू nx टू द पावर n माइनस 1 ये रूल अप्लाई किया, और cos x के लिए हो जाएगा माइनस साइन x. तो यहाँ पे हम फाइनल लिख सकते हैं 4x क्यूब, ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस, एंड दिस इज आवर आंसर, 4x क्यूब minus sin x. So let's take another example related to this. So see here, so if there is a
in example I am writing like this: x to the power 5u plus tan x. So this you have to solve, so you can write d by dx x to the power 5u plus tan x, derivative of x to the power 5u plus derivative of tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x टू द पावर 4 प्लस tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec square x। सो दिस इज आवर आंसर। सो 5x टू द पावर 4 प्लस sec square x। okay, so similarly we will solve some few examples which are related to our derivative, how to find the derivative. So let's take another example. So if the problem is x to the power 4 plus cos x, okay, x to the power 4 plus cos x plus, यहाँ पे प्लस है, प्लस sin x. So how you will find this? So you have to just write like this: x to the power 4 plus cos x plus sin x. यहाँ पे तीनों फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा d by dx x to the power 4 plus d by dx cos x and d by dx sin x, d by dx sin x। x to the power 4 के लिए 4x क्यूब, cos x के लिए माइनस sin x, और sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। तो ये हो जाएगा 4x to the power 3 माइनस sin x प्लस cos x। यहाँ पे तीनों फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। सो वेरी इजी, जस्ट हियर इज इन दिस प्रॉब्लम there is a x to the power 4 plus cos x plus sin x. So we are finding the derivative of each function. x to the power 4 का हमने डेरिवेटिव निकाला है, वो मिला हमें 4x क्यूब, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x, एंड फाइनली 4x क्यूब, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, so there is minus sin x plus cos x. So in this way we can find the answers of the derivatives of the given function. So ये हमारा फर्स्ट बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का हम बनाने वाले हैं, वहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।